हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्वेता और आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द विंटर एसेंशियल्स। विंटर एसेंशियल्स मींस जो आपका स्किन केयर में यूज़ होता है। एज़ वी ऑल नो कि विंटर्स आ चुके हैं और हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी हो जाता है और बहुत खिंचती है स्किन। तो विंटर सीजन में बिफोर मेकअप और लाइक एनी टाइम फॉर योर स्किन केयर, व्हाट इज़ द नेसेसरी स्टेप्स यू शुड फॉलो, that I'm going to cover in this video. So please don't miss any point because this is going to be very useful for you as winter is here and we don't want a dry skin or a flaky skin जो किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो definitely without any further delay, let's get started. So my first product which is very important, as we all know कि winters में हमारे lips कितने ज़्यादा dry हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, लाइक ब्लीडिंग कभी कभी बहुत इतने ड्राई हो जाते हैं कि ब्लीडिंग भी होती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ऑलवेज हाइड्रेट योर लिप्स। यू कैन यूज़ एनी लिप बाम। I would suggest this Langene lip balm is very nice, but if you have any lip balm, you have glycerin, Vaseline or anything which can hydrate your lips. During night time you can apply ghee also on your lips. That is also like एब्सोल्युटली फाइन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिप्स को हाइड्रेट कर रखें सो दैट वो फ्लेकी ना रहे और आपके ब्लीड ना हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी पेनफुल, आई मस्ट से. So yes, so my first product is the lip balm, which you can use any product, any brand. It is completely up to you, but hydrate your lips is a very important and first step in winter essentials. My second product is also very important. That is a moisturizer. I am using this Lotus moisturizer. You can also use any kind of moisturizer. So if you have oily skin, आपका थोड़ा oil ज़्यादा आता है और issue है, but still moisturizer is very important. Instead आपका skin oily है या कैसा भी है, तो अगर आपका skin dry है तो you can use this kind of cream based जो ज़्यादा थोड़ी thick कंसिस्टेंसी में आते हैं, इस टाइप के मॉइस्चराइज़र यू कैन यूज़ इट. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ व्हाट प्रोडक्ट व्हाट ब्रांड you are using, but apply this kind of moisturizer every day, almost like twice in a day. Apply it on your skin. If you have a oily skin, then apply a gel based moisturizer which is kind of this kind of ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, आप ये भी लगा सकते हैं. बट इसको अगर आपका ड्राई स्किन है एंड यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा. आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर क्रीम बेस्ड जैसा रहता है, और अगर ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र पर जा सकते हैं. तो दैट वाज माय सेकंड प्रोडक्ट. ऑल्सो वन मोर टिप, यू कैन यूज़ इट. अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है और बहुत फ्लेकी हो रहा है, रात को आप अच्छे से मलाई से आप मसाज करके उसको वॉश करके फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं. मलाई इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. होममेड प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है. अगर आपका ड्राई स्किन है, definitely go for and apply malai on your skin. That is going to make your skin very glowy and very smooth. So my third winter essential product is the serum. You can use a hyaluronic serum which is like hydrate, which is basically hyaluronic serums is basically using for hydrating. But if you don't have hyaluronic acid based serum or any product, you can use any type of serum. I am using vitamin C serum for Garnier, but again the product is not important. The product means this serum is important. You should use serum either like before moisturizer, or you can apply moisturizer, but serum, please apply serum always in your skincare. That will make your skin very smooth and very hydrating. This is also very important step. My fourth product is a base, you can say a base of like what is the makeup. This is not a skincare but a makeup, but that is like also very important in winter essentials. If you don't like, basically if you are like in winters, we don't want to use lots of powder based makeup products. So instead of powder based makeup products, you should use something like which is creamier based makeups. If you want to apply a blush, so don't like in winters, try to avoid powder based blushes. You can use tint instead of. I am using this Etude House ka tint, but you can use any tint. Apply it on your cheek, and you can also apply it on your lips. Even you can apply as an eyeshadow. That is completely fine. That is a cream based, again a product, and give a nice
natural type of flush on your face. That is a makeup, but that can also be a winter essential if you are a makeup lover. So that was my fourth essential, winter essential. My fifth product is very basic. It's very basic. This is a gulab gel. Always apply gulab gel before moisturizer, before anything. You can use gulab gel as a toner also. I am using this Dabur Gulab Gel. ये बहुत ही सस्ता भी है. इसका MRP is 80 and if you buy it on sale then you can get some discount also. So this gulab gel will makes you like एक नेचुरल जो फ्लश होता है और आपके जो पोर्स हैं उनको भी एक अच्छा सा स्मूथनेस देता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द विंटर्स. सो दैट वॉज माई फिफ्थ प्रोडक्ट. I hope you like this video. This is a very important winter essentials. Please let me know in the comment section if you have any suggestions or questions. Also, कुछ भी अगर आपको बताना है and you want some more tips and tricks in makeup or in skincare, you can ask me in the comment section. Also, please don't forget to subscribe to my channel, and definitely if you like my video, please don't forget to like and share. This is very important, so you can share it with your family members as well. And yeah, thank you very much. मिलते हैं next video में. Till then, bye.